Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this another session on Oracle, and today our topic is Oracle database backup importance and strategy. Now, uh, in my past 28 years of experience, I have noticed that most of the companies they are not concerned about a proper DBA and a proper backup. Now, there are certain scenarios where DBA or someone is taking backup for years, and at the time of disaster or something happened, unable to restore or recover the database. So what is the use of such backups? So today I'm discussing, or I'm going to discuss what is the importance, what kind of strategy you need. It will be a very high level, of course, will not go into much detail, but at least it will give a direction to everyone that they need to take a proper backup, and not only taking the backup, but also testing it, restoring it frequently. Maybe let's say, for example, you when you started, you restored or recovered after 1 month, and later 11 months you said, okay, I had tested it, it's working fine. No, it's since things are complicated, computer, many things are involved. Something got corrupted, anything can go wrong. Your logic can go wrong, which was working for 1 month, but later it will not work. So these are the things I will be discussing, and it will help the organization who are, sorry to say, using developers for database activities. Why I am saying, because everything has need a different knowledge skill set. A developer might not be a good database administrator, and vice versa. So sometimes companies are trying to save some money to keep one resource and do everything, but later when there is a disaster, uh, server got crashed, hard disk got crashed. Now things will go wrong. Yes, you are maybe as a developer pleasing your management that you are becoming or acting like a DBA, but think about that time when you need to restore something and you are not able to restore. So there is no business now. Your all data is no more there. Let's say, for example, there was a data of our company started 5 years back. Now you have all your business for 5 years, and now there is no database. What you are going to do? So these are the important things, and even management need to think on this, right? So I have a few slides I wanted to show. Oracle database. So if you see this picture in this, a database is not just a database, it's really a complicated structure. It has certain things in the memory, it has certain thing on the hard disk. Now, if you see here on the bottom, there is a parameter file, there is a password file, then we have data files. Data files are in which data is being written. These are physical files on your hard disk. These will grow as well, and you need to take care about that. So maybe a developer is not aware of such things. Then there are control files. Control files is a log maintaining. It will keep the latest information of your database, because your database is uh, having information, incremental information, that let's say, for example, there is a check. Uh, Current serial number is 555. So 555 is written in all these files. So it will know this is the current status of the file. Redo log files, because certain things are getting written, and archived log files. Archived log files, whenever you are having all your data written in your memory, it is also getting written in your archive logs. There are switches. So let's say, for example, if you have 3 archived log files, so it will write sequential 1, 2, 3. So to give a good performance, it will switch and it will write the previous one in your data files, right? So these are the important things, and for these you need duplexing as well. So for example, if you have 3 files,
these are on same hard disk and that hard disk got crashed, then you will not be able to recover. So for that, you might need to do these to another hard disk or another machine, or I mean duplexing need to be done. So one copy on one place and another copy on another hardware, or you can say hard disk. Another thing is why I'm saying developers, many companies I was discussing with them, they are taking cold backups for years. Uh, what is cold backup? Backup is you shut down your database, you copy the file, you copy the file to some other place, other hard disk, other network uh, uh, storage, or USB or whatever. But the objective is shut down the database and take the backup. Now here my question is, then why we are using Oracle database? Because when we shut down, we are losing the performance. Because performance is built, let's say, for example, if you have started your database today, it might take maybe 15 to 20 days to get to a cache which will serve you quickly with a good performance. But when you daily shut down your database, then you are killing the performance part, because there will be no performance then. Every time it has to read from your physical file, from your hard disk. So all that memory part is no more there, because you are starting from the zero. People think, or companies think, it is safe because we are making shutdown and this and that. Maybe for them it is safe, but again, everything has some pros and cons. Always, even if you are taking, let's say for example, there is no option and there is certain resources limitation, whatever, if you have to take the cold backup, at least try frequently, monthly at least. I would recommend monthly. At least in another machine, restore the backup. If you are not able to restore, then there is no point to take the backup. So this is very important. You must, no matter how much busy you are, how many projects you are doing, but if you are not testing it and tomorrow if you will not be able to recover, you are zero. You are not a hero. So this is the point you have to keep in your log. And companies think that since cold backup is very easy, shut down, take copy and this, no DBA is required, so they save the cost. But they are ignoring the risk. So always consider if you want to save the cost, you have to consider the risk part as well. So, so that's what I mentioned, risk and performance. You are having risks as well as you are compromising performance. You are not taking the full benefits of your database. So the more database is running in the running conditions, it will give you more good performance. Now, let's say, for example, there is a challenge. You are doing online business, e-commerce, and now how you will take the cold backup? Because you will shut down. That means, that let's say, for example, you have global customers and they are accessing your website. If you will shut down your database, performance, let's see, you want to compromise performance, you are not taking care of the performance, but now you are losing the customer, you are losing the business. Now, what to do? Now, you cannot shut down your database, right? So, here these all factors you need to consider. Now, here point is, instead of cold backup, you take hot backup. For hot backup, you need your database to be in archive log. I have observed companies, very big companies, their databases are not even in archive log. Now, what is the importance of archive log? Let me explain that. That let's say, for example, you are doing business because Oracle database is keeping data in memory and then in the online redo log files. Now these online redo log files, let's say for example, you have 3 online redo log files, for example, 50 MB per. So there are 3. When it will switch, they will write the previous one into the files, into the physical files. Now, if you are not writing these to the hard disk and crash happened, then you will not be able to recover your database.
and you will have to recover up to the last backup, no matter it is what kind of backup it is. So let's say, for example, you took last yesterday 5 o'clock or 10 o'clock, whatever. So you will not have any point that you will have to do data entry from last backup, full backup, last full backup till date or till time. So here there is a tool Oracle is providing called RMAN, Recovery Manager. My suggestion is for such companies, for those who are concerned, who are having concern about their data, their recovery, block corruptions, anything, they must use RMAN because this is where the proper backup mechanism is there. And you can manage your backups, like say, for example, full backup, incremental backups, cumulative backups, all these type of backups, and you can take these backups online. You don't need to shut down the database. But for this, you need expertise, right? It's not just, and by the way, this tool is really simple, really easy, but certain practice is required. Maybe you need to deal with few commands, but conceptual, you have to learn things, and then you can proceed. It's not something that only DBA, but DBA means who learned about it, right? There is no sort of flag on any person that he or she can be only DBA. A developer can learn because it's a conceptual thing. Who can learn a lot of development work and all those things? RMAN is a just small tool. I mean, command line tool even. You can just type and you can write scripts once and then you run. Then you test recovery. And recovery even when you are recovering it or restoring it, then it is just a small command and it will do all the work. So you need to work on RMAN. Okay. Now, there is another concept of disaster recovery because companies are thinking about backups, they are considering about DR sites, disaster recovery sites. So what they do, let's say, for example, they have one, their primary site is, let's say, for example, in Lahore. Now they want to keep their another database which is synced with this database in another location. Let's say, for example, Islamabad, Karachi, or somewhere else, or anywhere in on the cloud. So these two sites will be synced periodically. And now, in order to decide this DR, there are certain things you have to consider or points need to be considered. So I covered all those in very high level because whenever you will be discussing disaster recovery, you need to consider these things. So the first one is RTO, recovery time objective. Now, it all these things depending on your business, how much downtime you can afford. Few companies they can't afford even 1 minute. Another companies they say, okay, within 24 hours if we are back, it's fine. Our finance people can sit, no issue. There is another company having manufacturing. They can't afford the downtime because the plant will be down. So the maximum time your system can remain unavailable after disaster. So this is RTO. Let's say, for example, is 2 hours. If you consider now, you have to make a criteria, right? So I can afford downtime 2 hours, right? Service must be stored within 2 hours. So you have to consider when you are dealing another DR site supplier or any your own site, you have to think about these RTOs as well. While defining these one, you have to consider your business, you have to discuss with your business, all stakeholders, management. Okay, guys, this is the solution we are going to take, and this will be, and you have to take all these values from them as well. Let's say, for example, marketing says, guys, for us, sales and marketing, 30 minutes is fair enough that we can afford downtime. Finance say, okay, 8 hours because it's okay. We have to do entry. Even we can do entries on next day. And HR might give some certain time. So these are the different departments. So you have to bring all those on a paper, and then you have to decide which is possible and which you can achieve as well. HA, high availability, ability of the system to remain operational with minimum downtime. This is also another terminology you will be using it, high HA, that let's say, for example, if there's any downtime or anything, uh, sorry,
So this usually prevents outages, not recover from them, right? So HA is high availability, no downtime, 24 by 7 operation. So this is another thing you have to consider. There is another point, RPO, recovery point objective. The maximum acceptable data loss measured in time. Be careful while you are dealing with any data disaster recovery providers, service provider, anyone, or while doing your own work. How much time old data you can compromise? Let's say, for example, at the moment it is 10:25, and there is a disaster happen and things are not replicated, and they, I mean, user are entering data. I mean, they are continuously entering the data. So now last 15 minutes, if you can compromise, that means when the system will come back, you need to enter for these 15 minutes data. So you need to check your invoices, you need to check your payments in the system, if available, not available. So this is the maximum. You can lose maximum 15 minutes of data, right? So these are the things you need to consider, because while even on DR side, there will be a frequency to push the data. So you have to consider these RPO. BCP. So all these concepts or things comes under BCP, business continuity plan. I just wrote in a sequence that it will serve you, and it will give you the idea of what is BCP. Plan ensuring business operation continue even during disaster. Now you did all these things. Now you did all these things, but this is technology, right? Uh, there is always risk. So in BCP, you consider, guys, okay, these are the things. I have this RPO, I have this RTO, I have this DR site, I have these backups, this and that, whatsoever. Now, due to any reason, due to flood or due to any something else happened, and there is no system. IT system is down. There is no system. We promised 2 hours. It is going to be maybe 20 hours. It is maybe going to 2 hours. Let's say a hardware failure happened and part is not available. It might take. There's a lead time for each part. Maybe you have already with your vendor or whatever. But again, reaching to your server room, installing it might take time. Now, what to do? These are the things where you have to do this BCP. This all discussion undercomes BCP. This is a under the umbrella of BCP. So in BCP, you are going to sit with your again your while preparing this BCP with your department, with your user, understand their requirement and understand their business needs. So you have to consider. Let's say, for example, you will say, okay, guys, finance, we are still fine. If why I'm giving finance, because finance data entry can happen next day as well. But manufacturing, if it is stopped, you can't do anything. Receiving at your warehouse, you cannot stop because shipments are coming on the way, and you have to get rid of the vehicles, right? You can't wait over there. And there are certain shipments. You have to do the shipment. You cannot stop due to system. So now in the BCP, you might need to trigger manual processing. So your things should be ready if technology or systems are not available due to any reason. Can you do things manually? Of course, users will say, no, 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 this, but it's a risk. You have to take all these measures, so they should have manual registers with them. This is part of BCV, by the way. And let's say, for example, I'm just giving you a worst example. Your building is no more there. You don't have sitting place. Now what to do? In BCP, you have to address it. So now you need to arrange an alternate office, right, or building. You will not, let's say, for example, in your head office, there is a capacity of 100 people. Will you do in the case of disaster 100 people capacity? Might not. You will now again, you need to think about your power users. You have to write it in your BCP that, okay, in case of such disaster, these people, let's say for example, each departments they will give. They will be there on the DR office, I would say, or contingency office, you can say, or alternate place.
because you have to arrange for them the hardware, you have to arrange for them the laptops and connectivity and all those things because they have to work from somewhere, furniture, everything. So all these things need to be taken care in your BCP plan. I think now you got the idea where what is the BCP and what kind of things or risks you need to consider. Uh, must be as an IT professional, you need to. DR site. Now, while creating a DR site, uh, it it is considered that it is safe. So, for example, something happen in one city or in one another country. Even if you see cloud, they are keeping in another countries or on another continent even. So I mean, it's let's say for example something happen, war or flood or any disaster can happen in one place. It need to be the DR should be on another place somewhere uh, far away from the current place. If let's say for example you are keeping another site or servers in another you can say room, it will not make any sense. Now this building got risky or it collapsed, whatever you can say, so there is a risk. Now you said, okay, now another maybe 5 kilometers, I have another building, another office to save cost. That is our own building office. We will keep it over there. Now there is a flood or electricity breakdown. Something happened in this city. What to do now? What is the use of that DR site? So you need to consider all these risks. Of course, it will be always expensive because it will double the cost. Uh, so let's say, for example, your current infrastructure is there. You need to create another place. Might not be of the same level because that you need for emergency purpose, but still cost will be there. So it will be expensive to keep having a DR site. It will need more expertise. So let's say, for example, if you are managing only a local database or local system, now you need to maintain a DR site. Your responsibility, your expertise, everything need to increase. At the same time, you need to consider viruses. So let's say, for example, on your primary site, there is a virus and got replicated on your DR site as well. Then what to do? So I'm just sharing you the risk factors so you will be able to think on these factors while creating your DR site or any sort of backups or anything because all these type of risk companies are facing, they faced, so you need to consider these. ah, Another important topic because I'm trying to cover a very uh, area which is really important and it has different things. Now, when you are taking backup, you need to consider or develop a backup strategy because it's not just backup. You need a backup strategy. Do you want to take daily full backup or incremental? Why I'm saying daily full or daily backup? What you will do, let's say on Sunday, you took a full backup. Sunday, full backup. And full backup is, I'm just saying, 100 GB. 100 GB. So if we are taking each day full backup, that means 100 GB here up to this. How many? 700 GB will be there for a 1 week, right? 100. I'm just considering this an example. 100 GB, you might have more. Maybe you have 1 TB data. I don't know. It depends on your volume of your business. So I'm taking this example as 100 GB. 100 GB for 1 week, you got how much? 700 GB. Then on next Sunday, you will take backup because why I'm saying this one, you have to move these backups on an external device. It can be some dead drive, it can be USB, some other network, hard disk, anything. Because if you will keep everything on the same PC, on Thursday a disaster happened. All these backups no more there. Then what is the use of these backups, right? So why this is where I'm saying it is a strategy, right?
So on Sunday, you took full backup, then you are taking incremental backup. Again, on Friday or Thursday, something got happened. This machine is no more there. Hard disk failure happened. Anything got happened. Then uh, from this backup, nothing is there. What about the previous backup? You need to keep somewhere, right? Now this is called retention policy. If you see on the bottom, the last one, retention policy. You need to define in this strategy what kind of retention policy, how long, because you need space, right? You need hard disk, you need storage. You are keeping in somewhere else. So few companies, they are keeping backups in another side, let's say in the bank or in another office. You have to take these backups out of this building as well. Not only this machine, out of the building as well, because this building is risky. It can something can happen to the building. So this backup you need to keep somewhere else at a very secure place which is accessible as well in case of disaster. In case of disaster, if these backups or drives are not available, then again of no use. Now again you have a monthly, how you are going to take the monthly backup, because you have to consider your space limitations. So in this example, what I did, I'm just showing you on Sunday, if you are taking a full backup, uh, level 0. In RMAN, the full backup is 0 level. RMAN, I'm talking about now RMAN. Or you can take your own concept. It was 100 GB. Now, we are taking up to this, if you see here, it is cumulative backup, but only from the last 0 backup. This is the full backup, cumulative. So it will take from the last Sunday, what are changes done, it will take that backup. So it will keep increasing the uh, basis on daily data increase. So I'm just increasing here 50 MB, here again 50 MB, here 75 MB, here 25 MB, and here 10 MB. Because Saturday was less work, so we increased only 10 MB. So on Saturday, we have 100 GB plus these backups as well. Right? We reduced, right, the size. Instead of daily 100 GB, we reduced up to this. Now, here is the scenario. On Friday, you got a disaster. What to do now? For this, you need this full backup, which is of Sunday, and then apply Friday or Thursday full backup. Sorry, this cumulative backup. So what it will do, it will have all changes from Sunday onward till the crash happened. For this, you need redo log files as archived files as well. So there will be this backup plus archived files. Then you will be able to reach to this level, right? Now, another thing is, let's say, for example, instead of cumulative, we are having incremental up to the last backup. So this was the 0 level backup on Sunday. Then we on Monday we said 100 MB. Then this is now level 1 backup. This Monday is level 1. So 0 is this one. This is full. This is 0 means after 0 what changes are done, just capture over there. So now this is level 1. Here we took again incremental from level 1 means it will not be a cumulative. It will not from the 0 backup or Sunday. It will take only changes after Monday backup. So Monday is up to this, and then here we are just taking backup on Tuesday 50 MB, then 50 MB, 75 MB, 25 MB, 10 MB. Now, what is the issue in this? Let's say, for example, there is a crash happened on Saturday. What you need this backup to be valid, full backup. Then you need Monday backup, Tuesday, Wednesday.
Thursday, Friday, Saturday, you need to have all these backups and you have to apply all these backups. You have to restore these backups and all need to be valid. All these files need to be valid. So if due to any reason this uh, Wednesday file got corrupted or it got damaged, you are got error, then next data will not be there. This data you will not be able to because you need to restore all these files to reach to this, right? So this is where you have to consider what kind of backup strategy you are going to have. Now, these were the two strategies within a week, right? Now you need to keep a strategy for the monthly backups as well because you have to move somewhere else. So all these are weekly are there. You can keep, let's say, for example, last three backups because you have to update these RMAN as well. How old data you want to keep because it has certain control file. If you are keeping the RMAN in the control file, it will be by default 21 days. Uh, sorry, you can use RMAN catalog as well because then it will use its catalog. So these need to be considered. All these things need to be considered. And let's say, for example, now there's a monthly backup. What you will do, you will take a full backup, monthly backup, and you will move somewhere else, any other location. Now, for example, on 15th, you got corruption or something happened. First, what you will do, you have to, as per your strategy, you need to think, okay, from where I have to start, right? So this type of strategy you have to plan in your backup strategy. For RMAN commands in ERPstuff.com on the left side, you can see I just have a thread. I just took some picture. I have placed here the commands of RMAN. You can take them as a reference or you can even read your Oracle notes. Uh, these are many commands I just took on the top. I will share the link under the video, which I will be uploading in the YouTube as well. So nothing to worry, nothing to note from here even. It is 11,300 number topic. So you can find over there the commands, how to take the backups. So first you will connect to the RMAN with the RMAN target, it will connect and things like that. Very simple. Believe me, it's very simple, but someone need to know about it. Someone need to read about it. You cannot be just two commands, you need to practice it. You need to restore, you need to recover. Even this can recover your block corruptions as well, which a cold can't. Any other backups will not, but RMAN even can do up to block levels recoveries as well. So just imagine the strength of RMAN. Okay, now keeping in mind all these challenges or things, now you have a cloud option. In cloud, because they will have their own DR side, they will have backups and all those things. Let's say Oracle Cloud, they are providing the DRs, they are providing your backups, everything is there, automated backup, everything is there. So you need to consider the cost and control because then control is somewhere else, you know, due to all these geopolitics and all those things. You might not have the full control because cloud is somewhere else. You need strong or good internet. So if internet is not available, you have to consider that part as well. Uh, it is, yes, secure, but again, security is another consideration. Few companies, they don't want to keep their data somewhere else or externally on any other sites. So this is where the cloud is there, and you have to plan about your strategy. Way forward. Now, I just gave you these information about the backups, TR things. Let's see. Now you are sitting and just check your readiness. If a disaster happened right now, what you are going to do? Because if you are not having a proper plan, good plan, just you have to think what you are going to do. So if you are ready,
you have good plan, you have everything there. You have the DR side, you have everything. But when it was tested last time, even for DR side, you have to frequently test as well. It's not something if 5 years back you you created the DR side and it is running fine. No, 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 no. There is no backup or any DR side good if you are not able to get it back within agreed time. So if you are not feeling comfortable, make a strategy from today onward. Don't delay because this is something important. And honestly speaking, I'm not selling anything over here because companies sell their solutions, right? I'm just creating an awareness that this is a risk factor, and any manager, IT manager, professional, or even management of the company, they need to think. They need to consider it's a very important. Yes, you are using a good technology, you have good server, but again, because everything is hardware, anything can happen. Things can go wrong. Virus can collapse. Your systems, your strategy, everything. So all these strategies need to be there. Otherwise, you are at a very high risk. Okay. I have covered this at a very high level, introducing you to use RMAN and everything. And next session, I'm planning on Oracle Apex and Pakistan. I'm planning this session to be in Urdu. This is only I'm focusing, and anyone else who knows Urdu can also attend because I want to address Oracle Apex utilization. We are using it properly. We are not using it properly. All these things are there. If you want to register now, you can even scan now this QR code. You can register it now for this session, and we will be having this session on next Saturday at 10 a.m. So now you can, if you want to scan, you can scan. And meanwhile, if you have any question, please now we can have question answers as well, or discussion if you want. हेलो, स्कैन हो गया आपका? यू गॉट रजिस्टर्ड? रजिस्ट्रेशन हुई नहीं हुई? एनी प्रॉब्लम? और अगर कोई अपना बैकअप का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, प्लीज टू शेयर योर expertise or anything. Let's say any disaster happened, you got hit by something and you want to share, please do share. I think I have one point, the chat. Now registration on. Excellent. And please also suggest any topic in our coming sessions if we can include that topic as well, because these are the topics I am considering important. So I just share my experience or my knowledge or whatever you can call it. But the objective is that community need to have awareness. They, of course, they might not use everything because due to certain their company constraints, their own constraints, time, this. But believe me, if you want to use any other feature of Oracle or anything or not, that is something optional or nice to have. But backup, you cannot compromise. Backup and recovery, you cannot compromise. This is something must and must to have. You can survive with a slow instance. If performance is a bit slow, it's okay, fine. But you cannot survive for a long time if there is a disaster happen and you are not having a good backup. I am saying good backup. Good backup is a backup which you can restore. If you are not able to restore, there is no backup. And believe me, many companies were having last 1 year backup and they were not able to restore a single backup. Then you are you got collapsed, right?
So any company, any individual, any manager need to consider all these things. Again and again, I'm saying backup is critical. And when things happen and you are not able to recover, nobody will listen to you. Yes, you have to fight for your rights as well. Sorry to say, if company is not investing certain things, you have to, because this is a risk for you as well. It's not only for business. This is for you because you are responsible. And later they might say, in case of you are not able to recover, you might say, no, no, I don't had proper resource to manage it, this, that. They will say, no, you had to tell us this and that, then you will not be able to get any escape. So from now onward, you have to think on these lines that you are responsible and tomorrow you will be accountable for this. And backup, backup, backup. So if let's say, for example, in Oracle Apex or any, you are trying to use AI, okay, good to have, but again, backup is important because features, they are not there. It can increase or decrease your performance, but this is something very important. Dedicated session related to Oracle Apex and its things, how to stuff like that as it shall be beneficial for me and others too. Information session. Thank you, sir. Welcome, Amber Hussain and Danish Ubaid. Danish Ubaid is suggest. Of course, Danish, this is what I'm going to discuss in this Oracle Apex. Uh, why I'm pushing Oracle Apex? To be honest, it's not something I'm marketing anything, because many companies they are using Oracle, and Oracle Apex is the way forward. Why? Because this Oracle Apex is giving you advantages or benefits which uh, I mean, other, let's say, reports, yes, they were good. I'm not saying they are not good, even they are good. But the things you are getting with Oracle Apex are the requirement of the time. Let's say you are getting web services, you can deploy, you can consume the web services using ORDS in Oracle Apex. Fair enough, you got it. You got good dashboards. It's easy to learn for any Oracle developer or database administrator who knows SQL, PL, SQL. Oracle Apex is a 1 week job. That's it. Yes, you can. I'm not saying you will be becoming very expert, but at least you can start developing application. Believe me, within 1 week. Just start learning and you will be able to develop. And this is the future. Now you need things on cloud, connectivity, integration, anything, what you want to use, or you can use Oracle Apex, right? So, and another thing is any even new, you can say graduates, they can easily learn Oracle Apex, they can start the job. So my objective is that newcomers, they can quickly take a job. Existing firms who are developing forms and reports for last 20 plus years even. For them, it is just in a simple word, I would say like a halwa. 1, 2, 3. You can just easily learn. Believe me, there is no rocket science in this, right? So you must consider it, and uh, learning another language, let's say Python, for an Oracle developer might be a tough, but this is something you are already having expertise and knowledge. Even your existing ERPs, let's say you will have PL SQL, you have packages, function, anything can be used in Oracle Apex. So you don't need to even develop those. You can just use this logic. This is a web-based application, and you can try. Believe me, it will be very easy. Okay, let me take the chat part. Uh, Osama bin Jafar. Sir, as you did explain the all strategies, that's great, but for implement, we need demonstration for best solution. And for Apex, we also need backup of Oracle Apex application, how we could handle it. Osama bin Jafar, he's explaining, asking about Oracle Apex backup as well. Oracle Apex, again, where you are having Oracle Apex, all depends on things. Oracle Apex is not something, it's a database, right? On the backend, it's a database.
So if you are having an Oracle Cloud autonomous database, okay, there you have the facility over there to take the backups, auto backups, everything is there because you will not have the access to the database. But if you are having your own cloud, virtual machine, or on premises, you will take the backup of your database. That's it. It's a Apex is nothing separate. It's backup of your database, right? Everything is in backup. The good thing is of Oracle Apex, it's metadata, means definition. It has not. There is no physical file of Oracle Apex, any report, page, anything. Everything is in Oracle database tables because at runtime when you open a page or report it will generate the page or report, so everything is in database, right? Could you include session on CI/CD in Oracle Apex? It would be helpful for understanding real world deployment practices. We can try in next sessions, so it is really required as well. And if you have any question or suggestion for the future sessions or this session, please feel free to ask. And we have another 5 minutes at least to complete 1 hour, so we can uh, continue or move forward. जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन, एनी डिस्कशन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आसिम फ्रॉम फैसलाबाद, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ऐसे है कि क्वेश्चन तो कोई नहीं है मेरा, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग बैकअप्स। श्योर। हम लोग ओरेकल 21 सी यूज़ कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जी जी। और इस पे हमारी ओरेकल की अपेक्स की एप्लीकेशंस भी चल रही हैं और ओरेकल फॉर्म्स भी चल रहे हैं। तो मोस्टली जो हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया फॉर डिज़ास्टर रिकवरी, we have multiple backups, like we are using Veeam's backup। अगर आप उसको मतलब जानते हो, Veeam's backup and solutions। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, हम उनको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम आरमैन को यूज़ कर रहे हैं। थर्ड वन, हम ओरेकल की जो अपनी डंप साइड होती है, जो टाइम टू टाइम जनरेट हो रही होती है सिर्फ डाटा के लिए। तो मुझे जो सबसे फिजिबल और सबसे जो मोस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन जो लग रहा है ना, जो जिसको मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए मतलब बेटर है रिकवरेबल के लिए, तो इट्स आरमैन एंड वीम। वीम बैकअप is a third party, but RMAN is totally based on Oracle. How much it is costing you the Veeam backup? Nothing. خلاص. If you need too much expertise or it is simple for you? It's not too much जो है मतलब मतलब it's मुश्किल very नहीं है। easy. No, हाँ it's हाँ। very easy. It's very easy. ओके। Even anyone can use, and anyone can take backup, and anyone can take from infrastructure, from replica. Even it's provided replication services as well. ठीक ठीक हो गया। So मतलब you can completely your server as replica. एज अ रेप्लिका, राइट? सो वीम बैकअप देखें, एक ऑप्शंस आपके पास है, वीम बैकअप है, आरमैन है। ये प्लीज एक्सप्लोर करें। देखें ना, आप लोगों ने कितने मल्टीपल चीजें कर रहे हैं ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बैकअप। जी जी। अगर बैकअप आप चलो ले भी रहे हैं और वो रिस्टोर नहीं होता तो इवन इन फॉर जी जी। जी, इवन आपको पता है कि डाउन टाइम जो है वो यूजर्स एक्सेप्ट नहीं करता नॉर्मली ना। सर वो बिजनेस ही कहता है नहीं कि करता, हम यूजर क्यों करे ना एक्सेप्ट करे। करें यहाँ। हाँ बिजनेस ही जी, नहीं करेगा ना, बिजनेस की बिजनेस नहीं करता। वो कहता है कि बिजनेस। क्यों हम इतने देर तक वो उसको डाउन टाइम दें। जी जी। तो इसलिए जो है ना वो मल्टीपल ऑप्शंस रखी हैं कि फॉर डिजास्टर रिकवरी, फॉर मल्टीपल लोकेशंस। इनफैक्ट हम मल्टीपल लोकेशंस यूज़ कर रहे हाँ हैं, क्लाउड यूज़ कर रहे हैं हम थ्रू टावर्स, एक सेपरेट लोकेशन यूज़ कर रहे हैं, एक सेपरेट सिटी यूज़ कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। राइट राइट। सो अगेन देखें ना, इतना इज इट बीम बैकअप, BEAM, वीम वीम। वीम है, नॉट बीम। मैं इसकी स्पेलिंग लिख दूं ना, इट नहीं उसका, वो चैट में पूछा है इन्होंने। uh, फहद बाहू, बाहू, if I'm spelling it right, I don't know how to reply to that.
हाँ ओके। वाइम बैकअप एंड रेप्लिकेशन। VEAM। जी। VEVA VA, डबल ई एम। अच्छा EEM, वेम, VA। ओके, लेट मी शेयर विद हिम। ओके, वो अ, और आपका माइट बी कोई? माइट बी स्पेलिंग मिस्टेक, VEEAM। वी, VEEAM। मैं लेट मी करेक्ट। जरा चेक कर लेना। मैं एक मिनट चेक करता सिकंदर हूँ। भाई, हाँ, मैंने यूआरएल कॉपी कर दिया है। कर दिया आपने, एक्सीलेंट। जी। यस यस, एक्सलेंट। हाँ, VEEAM, सॉरी। यस। सो लेट मी करेक्ट इट। वही मुझे भी VA गलत लग रहा था। वी, चलो ये कर दे, VEEAM। ये जरा आप एक्सप्लोर करें। अच्छा, एक और काम करते हैं ब्रदर। नेक्स्ट सेशन जो हम एक करें, आप जरा एक VM पे कोई थोड़ी सी हमें सेशन दे सकते हैं? जी जी श्योर, मैं ऐसा कर लेते हैं ना? जी जी। या अगर अभी कोई आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, यूजर्स के पास तो टाइम हो, क्योंकि दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। मैं बैकअप पे बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आई नो द प्रोफेशनल्स, दे आर वर्किंग इन द कंपनीज। बाज बात उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती, सर एक्सप्लोर करना इसमें मुश्किल हो जाता है। जी जी इसमें बोले। वीम का जी, इसमें एक वीम का जो मुझे सबसे बड़ा एज लगा है ना, वो ये है। आप आरमैन की बात कर रहे हैं ना, मतलब हम लोग आरमैन यूज़ कर रहे हैं। जी जी तो आरमैन के लिए हमें एक सेपरेट, जो जिस सर्वर के ऊपर हमने इसको रिकवर करना है, जी जी। वी हैव टू रिस्टोर फर्स्ट, ठीक ठीक। देन वी हैव अप्लाई बैकअप। ठीक हो गया। ऐसी है। बिल्कुल है। अच्छा, वीम के अंदर क्या है कि वो हम पूरी की पूरी फिजिकल मशीन, इनफैक्ट पूरी की पूरी जो है वर्चुअल मशीन, एज अ बैकअप एंड एज अ रेप्लिका स्टोर कर सकते हैं एट डीआर साइट। ठीक हो गया, और ये ऑनलाइन होता है बैकअप? ऑनलाइन रख सकते हैं, ऑफलाइन रख सकते हैं, दे आर मल्टीपल ऑप्शंस, दे हम्म हैव यूज रिपोजिटरीज, प्रॉक्सी सर्वर्स, हम्म। क्लाउड सर्विसेज। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब इसमें अगर कोई होगा तो फर्दर आपसे भी मैं कहूँगा कि कोई अगर करना चाहे, इंफॉर्मेशन लेना चाहे, तो ये वीम बैकअप का आ भी गया, लिंक भी आ गया। जायद भाई, आप लोग वीएम वीम यूज कर रहे हैं? नहीं सिकंदर भाई, हम तो आर्मन यूज कर रहे अच्छा, हैं। आर्मन यूज कर रहे हैं। आर्काइव आर्काइव लॉग और आर्मन यूज अच्छा कर अच्छा, रहे हैं। आर्काइव लॉग के साथ ये भी एक्सप्लोर दे करें। हैव बेस्ट दे हैव बेस्ट आरमैन इज द बेस्ट हम्म। फॉर। अगर हमारे पास ओरेकल का जो है सेकंड डीआर साइट रेडी है, जी जी। जस्ट वी पुट बैकअप्स एंड रिस्टोर देम। हाँ 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 हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो लेकिन वहाँ पे टाइम टेकिंग है कि अगर आपके पास एक सेकंड सर्वर है, पहले आपने उसको दोबारा से री इंस्टॉल करना है, देन आपने आरमन बैकअप आर्काइव जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। गया। और अगर उस टाइम आपका कोई एरर आ जाता है आपकी रिकवरी साइट पे, हम्म। वी हैव लॉस्ट ऑल द थिंग्स। यस, वो टाइम तो जाहिर है, आपको इवन फाइल्स कॉपी करने में एक जगह से दूसरी जगह जी टाइम जी लगता है। बिल्कुल। जी जी जब बिल्कुल। आप और वीम जीबीज में ये, बैकअप जी जी। और वीम बैकअप का सबसे जो रेप्लिकेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वीम बैकअप की मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं कर नहीं, रहा हूँ। श्योर। उसका जो उस टूल का जो रेप्लिकेशन है ना फीचर, जस्ट अमेजिंग। हाँ 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 हाँ, ठीक हो गया। जस्ट आपने वीम बैकअप से एक कमांड जनरेट करनी है हाँ हाँ। कि मेरी जो मेन साइट है वो डिजास्टर की तरफ चली गई है, अच्छा, मुझे रेप्लिका ऑन कर दें। ठीक तो है। वीम बैकअप विद इन मिनट्स, हाँ। आई थिंक जस्ट इट्स जस्ट टेक अ 5 to 10 minutes, हम्म, आपकी रिकवरी साइट जो है वो ऑन हो जाती है, और जहां तक का बैकअप होता है वो आपको मिल जाता है। मिल जाता है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगेन और ये उसमें आपकी, जी जी। जी जी, और उसमें एक और ऑप्शन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज आप आपने रेप्लिका साइट अपना ऑन कर दिया, आपका यूजर उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, इन द मीनवाइल आप रिकंस्ट्रक्टिंग कर रहे हैं अपनी मेन साइट को। हम्म, तो वीम आपको दोबारा से री इम्प्लीमेंट भी करती है आपकी रिकवरी साइट से आपकी मेन साइट पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब तो ये जो चेंजेस आपकी, हाँ जी, जो चेंजेस आपकी रेप्लिकेशन साइट पे हो रही हैं, वो ऑटोमेटिक रिवर्ट बैक होती हैं आपकी मेन साइट मेन साइट पे, ठीक हो गया। तो ये भी देखे ना, अब एक है टूल, ये आप यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि इसको, अगर हर एक की अपनी है ना फिजिबिलिटीज या वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इज इट अ फ्री टूल और व्हाट? पे। इट्स अ फ्री, नॉट इट्स अ पेड, हाँ हाँ। बट इन पाकिस्तान नहीं, अब वी लेकिन हैव क्रैक्ड नहीं वर्जन। नहीं, जो इसका प्रॉपर वर्जन है ऑफिशियल, वो तकरीबन लाइसेंसिंग कॉस्ट कितनी है इसकी? सर लाइसेंसिंग कॉस्ट इसकी देख लेते हैं, मैंने देखा नहीं है, लास्ट मैंने देखा था। चले, अब जिसने, अगर किसी ने करना होगा ना, तो वो इसको एक्सप्लोर कर लेगा, कि इसको करके तो वो उसको यूज करें। ठीक हो गया ना? लेकिन जी आरमैन क्योंकि ओरेकल का अपना है,
और जो लोग कोल्ड बैकअप बिल्कुल ले रहे हैं वो रिस्की है, अब क्योंकि एक तो वो डेफिनेटली कोल्ड बैकअप रिस्की है। रिस्की है वो, मतलब ठीक है छोटी कंपनी भी हो, लेकिन कल जब आपको बैकअप चाहिए, अगर आपको बैकअप ना मिले ना, तो फिर पता चलता है कि क्या जी चीज़ जी। अच्छी है क्या बुरी है। जी जी ऐसी है। पॉइंट तो यही है ना कि अगर आपका बैकअप रिस्टोर नहीं होगा तो फायदा है, चाहे वो कोल्ड है या ऑनलाइन है या लाइव है, व्हाट्सएवर। ठीक हो और गया ऐसे ना। ही बैकअप का तो फायदा तब है ना अगर आपको टाइम पड़ने पे वो रिकवर हो जाए। रिकवर हो जाए और टाइमली रिकवर हो। हाँ जी। ये ना हो ना कि वो बैकअप रिस्टोर करने में 5 दिन लग जाए, फिर तो काम हो गया ना। हाँ जी ऐसी ही है। हाँ जी सर, और एनीवन एल्स? वालेकुम थैंक यू सर। सर। थैंक यू। हेलो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसकी ये वीम की अगर कोई प्रेजेंटेशन हो जाए तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं ब्रदर से कि अगर ये कोई हमें नेक्स्ट सेशन पे हमें बता दें, या फिर आप खुद ही देखें ना, गूगल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी। हाँ ना वो तो हम मिल जाएगी, लेकिन अगर लाइव प्रेजेंटेशन हो जाएगी तो हमें बहुत आसानी होगी। ठीक हो गया। जी मेहनत नहीं ब्रदर, करनी है, कब आप आसानी होगी। कर सकते हैं कुछ डिटेल्स? हसीन साहब। मैं जी सर, मैं सर इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि हाँ, कमिंग सेशंस के अंदर ना मैं आपके साथ एक सेशन ज्वाइन करवा लूँ, बस ठीक है ठीक है। जिसमें ये मैं जबरदस्त वीम हो को जो जाएगा है ना फिर। वो प्रेजेंट करवाता हूँ कि वीम जो एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। हाँ वो ज़रा इनको, मतलब हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपके हम्म। पास एक ऑलरेडी चीज़ चल रही है और आपके कंफर्ट लेवल है। मैंने इसका जी सुना जी। हुआ तो था, लेकिन मैंने यूज़ शायद पर्सनली तो नहीं किया, लेकिन ये यूज़ कर रही हैं कंपनीज। सर मैं वीम से पहले जो है ना वो कंफर्टेबल था, लेकिन इसके बाद मैं कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ। तो हम्म। इसने काफ़ी जो चीज़ें हैं ना वो मेरे माइंड से खुद टेक ओवर कर ली हैं। हाँ सिंपल कर लिया ना। हाँ सिंपल कर ली हैं वो, मतलब बिल्कुल। मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है यार मेरा बैकअप जनरेट हो रहे हैं। मैं टाइम टू टाइम उसको चेक करता रहता हूँ कि मेरा बैकअप जनरेट हो रहे हैं, वो बैकअप में कोई एरर तो नहीं है। ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। तो भाई मैं एक राइट। चीज ऐड कर दूं, अभी मैं जी चेक जी। कर रहा था तो फ्रीज कम्युनिटी एडिशन भी इसका अवेलेबल है। ठीक है, तो एक्सीलेंट। उसमें कोई लिमिटेशंस होंगी ना? जी जी डेफिनेटली लिमिटेशंस हैं, डेफिनेटली। उसमें हाँ। लिमिटेशंस हैं, वो आपकी जब सेशंस चलते हैं ना बैकअप्स के, हाँ जी। उसमें लिमिटेशंस हैं, वो आपके इंस्टेंस लिमिटेड है। लाइक ठीक आपको हो कम्युनिटी एडिशन में सिर्फ 10 सेशंस मिलते हैं, गया। 10 इंस्टेंस मिलते हैं बैकअप के लिए। ठीक 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 तो ठीक। अगर आप उसको पेड पे चले जाते हैं या आप उसको किसी तरह क्रैक कर लेते हैं हाँ। तो नहीं, क्रैक वो, का तो हम सोल्यूशन नहीं ना आप कर रहे, हम तो, हमें तो है कि जी प्रॉपर सोल्यूशन होना चाहिए फॉर द कंपनीज। नहीं वो देखिए वो और कंपनी जो है वो अगर उसको प्रॉपर यूज करना चाहते हैं दे कैन बाय इट। हाँ, दे कैन बाई इट, राइट। दे कैन बाय इट। क्योंकि कम्युनिटी में कोई क्रैक चीज को प्रमोट नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं। कल को अगर लेट से प्रॉब्लम आती है तो जाहिर है कंपनी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वीएम वाले या कोई भी, कि जारी भाई क्या प्रॉब्लम है। तो ये हम कहते जारी हैं सी कि बात है। प्रॉपर आपका जो लाइसेंस वर्जन है ना, वो आप यूज करें, लेकिन करें कोई ना कुछ करें। और ये कोल्ड बैकअप भी लें तो उसको रिस्टोर तो करें ना। चलो जी, सारा डेफिनेटली वर्स्ट पार्ट है डेफिनेटली ना। एटलीस्ट हाँ, एटलीस्ट 15 डेज बाद जो है ना उसको चेक जरूर करें। चेक जरूर करें, क्योंकि मैंने देखा है कंपनी से एक एक साल का बैकअप। इवन मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बैंक में नहीं हो रहा था, चलें आगे तो छोड़ दें, ऐसे ही सर नहीं हो रहा नहीं हो रहा होता, वो बीच में कोई ऐसी वो ग्लिच रह जाती है या कोई हो जाती है, जो कि स्क्रिप्ट्स रनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और वो जी वो कोई करप्शन हो गई फाइल, वो बस बैकअप ही हो रहा है। बैकअप हो रहा है। अच्छा, जो आपका कोल्ड बैकअप जो वैसे आपके ब्लॉक करप्शन डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन जी जी आरमैन आपके ब्लॉक्स करप्शन को भी डिटेक्ट कर देता है और बताता है, और उसको रिकवर भी करने देता है कि आप जी उसको जी रिकवर बिल्कुल। करें। हाँ, ये जी जी थोड़ा सा बिल्कुल। आरमैन की आरमैन प्लस के पॉइंट है। बेनिफिट्स हैं, आरमैन के प्लस पॉइंट्स हैं। एक्सपर्टीज देखें ना, अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना, इसके लिए थोड़ा सा बट नॉलेज आपको। इट्स हाँ, नीट इट नीड्स एक्सपर्टीज एज एक्सपर्टीज डीबीए। एक्सपर्टीज आपको प्रॉपर डीबीए की पढ़ना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा टाइम। नॉर्मल डेवलपर जो है वो आरमैन को नहीं यूज कर सकता। नहीं सर, वो नहीं करेगा ही नहीं, उसका इंटरेस्ट नहीं है। हाँ उसका ऐसे ही इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल। और कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे भी नहीं कर रही होती ना, वो कहती है ठीक है डीबीए हो तो ये भी साथ करो, तो वो फिर इतना वो क्यों पड़ेगा चक्रों में। डेफिनेटली ये भी थोड़ा सा डेफिनेटली। हमारा डिलेमा है ना, कि हम वो प्रॉपर किसी को अकोमोडेट भी नहीं करो, कहते हैं डबल ड्यूटी करो लेकिन सैलरी वही होगी, वो क्यों खपेगा। लेकिन प्रॉब्लम पता तब चलती है जब रिस्टोर नहीं होती चीज। हाँ जी, पर वो फिर कंपनी ज्यादा पैसे पे करती है रिस्टोर हाँ, करने वो के लिए फिर क्योंकि वो एक वो, अलग है। हाँ जी क्योंकि वो उसको फिर वो डाटा चाहिए होता है ना अपना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो फिर देखे ना वो ढूंढते हैं कि हाईली हाईली स्किल्ड डीबी ढूंढती हैं ताकि हमारा डाटा जो है ना वो किसी तरह रिकवरेबल हो एग्जैक्टली जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो पहले ही बंदा रेडी हो। इसलिए मैं देखे ना, मैं ये सेशन में बाद में यूट्यूब पे भी करता हूँ, ताकि
इसको मैनेजमेंट के जो हैं लोग जो जिन्होंने डिसीजन मेकिंग है वो इसको समझें कि यार ये क्या चीज़ होती है। इट्स नॉट जस्ट कि कोई भी बंदा कॉपी कर ले। इट्स जी जी नॉट ऐसे ही जस्ट है कॉपी सर। पेस्ट, इट्स नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट। अगर आपका देखे ना, अगर किसी डाटा क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, ना मिला तो दोबारा शुरू कर देंगे, इट्स ओके। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके बिजनेस का डाटा क्रिटिकल है, आपके पास रिसीवेबल्स हैं फॉर एग्जांपल, और आपका रिसीवेबल का ही डाटा खत्म हो जाता है, या तो अब फिर वो सारे की फिर हार्ड कापियां रखते हैं, हार्ड कापी भी इतनी मैनेज नहीं होती, फिर आप क्या करेंगे, कैसे पूरा वो डाटा, बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली सर ऐसे बहुत ही। मुश्किल हो जाता है। तो ये बैकअप को ना इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। लोग समझ रहे हैं कि जी क्लाउड आ गया है तो डीबीएस खत्म हो गए हैं, खुदारा इस आइडिया से निकले हैं, ऐसी चीजें नहीं है। हर एक की एक अपनी एक्सपर्टीज होती है, उस उनको यूज करें, उनको प्रॉपरली पे करें, क्योंकि अगर आपने बिजनेस करना है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्सपेंसेस तो आते हैं, लेकिन आप एक्सपेंसेस, इस तरह के एक्सपेंसेस खत्म करके रिस्क पे ना जाएं। कंपनी से मेरी ये रिक्वेस्ट है। बाकी देखें ना, हर एक अपना वो है, लेकिन रिस्क से अवेयरनेस जो है ना वो जरूरी है। तो काफी कंपनीज ऐसे ही मिस्टेक्स करती हैं, बट व्हाट टू से, वो समझते हैं बस बैकअप हो रहा है। राइट जी, एनीथिंग एल्स? तो मेरे ख्याल में अगर कोई रह गया रजिस्ट्रेशन में तो अभी कर सकता है, बाद में मैं खैर शेयर करूंगा लिंक भी और ये सारी चीज़ें भी। तो मैंने सोचा कि ये एक है कि हम ज़रा डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के हिसाब से, कि पाकिस्तान में हमें क्या चैलेंजेस हैं, उनको हम कैसे एड्रेस करें। हमारे पास ओरेकल ईबीएस के इंस्टॉलेशंस हैं, वो क्या कर सकते हैं इससे। हमको इस तरह की टॉपिक्स में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा डिस्कस करूं। और इस सेशन को मैंने रखना ही उर्दू में है, जिससे फॉर पाकिस्तान, और अगर कोई और पाकिस्तान सॉरी उर्दू समझ सकता है तो जो ही कैन ज्वाइन, नो इशू। बट द ऑब्जेक्टिव इज कि मेरे लोकल कम्युनिटी को ज़रा ज़्यादा अवेयरनेस इसकी होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे डेवलपर्स वो ज़रा इजी फील करते हैं इन देयर लोकल लैंग्वेज। सो मैं इंशाल्लाह ना कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट हम ये सेशन उर्दू में ही करें। ठीक हो गया जी? थैंक यू सर, यू थैंक आर यू। वेलकम। थैंक, आप कहाँ से, फैसलाबाद सर से? जी जी मैं फैसलाबाद से। हाँ, फैसलाबाद से, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब इल्म में आ जाती है ना हाँ जी, तो बहुत काम की होती है जी। काम की होती है। देखिए ना, मैं इसीलिए मैंने ये सेशन दिया, को आपको मैं किसी को एक्सपर्ट नहीं कर रहा। जी जी बिल्कुल। ये एक मैं आपको आइडियाज या एक डायरेक्शन वो दे रहा हूँ, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, जी जी बिल्कुल सर। ताकि अगर किसी के नॉलेज में एक चीज नहीं है, बैकअप तो सारे ले रहे होते हैं। अब मैंने आज इतना डरा दिया है ना, आज कम से कम सोचेंगे तो सही ना कि यार ये बैकअप तो वाकई होना चाहिए। कुछ लोग चलिए ओवरलुक कर सर। रहे होते हैं, अच्छा जी मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ आई एम बिजी, प्रोजेक्ट्स हैं। जी जी। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने देखा है कि जब आपके सर पे आती है ना बात, रिस्टोर हाँ आप नहीं सर। कर पाते हैं, तो सब पे फिर आपके चढ़ाई करते हैं। बिल्कुल सर। सो बेटर कि आज से आप जाग जाएं। अगर आपने कंपनी में रहना है तो ये चीजों को करें, क्योंकि कल अगर कुछ होता है जी तो सर। फिर आप प्रॉब्लम में होंगे कि भाई ये क्या है, मैंने तो आपको दी थी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी जी आप मुझे सर। बता। फिर सारे ऊपर आ जाते हैं कि जैसे जी आप मुझे बताते हैं ना, आपको ये रिक्वायरमेंट थी, पहले मैं भी बेशक ना सुन रहा हूँ, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो फिर सारे वो आपको जाग हिट, जाते हैं सर। हाँ, आपको आपको टारगेट करते हैं। तो जी जी मेरा सर। ये इस वक्त इन सेशंस का पर्पज ही यही है। मुझे एकदम मुझे कुछ रिसेंटली एक बड़ी कंपनी से हुई इंट्रोडक्शन, उनके वो आर्काइव लॉग ही ऑन नहीं थी। मैं कुछ जालिम के बच्चों, ये क्या कर रहे हो, आप लोग कैसे सरवाइव करोगे, ये है वो है। तो एनीवे, तो मैंने कहा यार ये जरूरी है सेशन कि लोग बैकअप्स को या इवन डेटाबेस को वो एज अ एक्सेल या नोटपैड यूज कर रहे हैं। मतलब इस तरह ना करें, फिर ओरेकल का फायदा क्या हुआ। बिल्कुल सर। जब रोजाना आप शट डाउन कर देते हैं, ठीक है, आपका वो जो हो गया, वो अब हर एक की अपनी है जी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हैं, वो 100 चीजें आ जाती हैं, फिर आप क्लाउड पे बिल्कुल। चले जाएं। जी सर। देखें सर आप, मेरी जी जी, जी प्लीज सर बोलें। मेरी एक्सपीरियंस रही है इसमें। तकरीबन 2-3 महीने पहले हमारा एक टेबल जो है वो ब्लास्ट हो गया था ना। क्या चीज? तो एक पूरा का पूरा टेबल जो है वो डेटा उसमें लॉस्ट आ गया था वो। अच्छा, टेबल, ठीक है, पूरी टेबल की। ठीक 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 ठीक। हाँ, तो मैंने अपनी कोशिश की थी सर। तकरीबन आज से 10 साल पहले जो एक्सपोर्ट है हम एक्सपोर्ट करते हैं डेली डेली बेस पर। ठीक है। और ये सिस्टम विंडोज में जो हम बैच फाइल लगते हैं बैट की डॉट हाँ बी हाँ आई टी, हाँ हाँ
इसके थ्रू रोजाना 8 बजे हम बैकअप लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली दे। और हर हफ्ते में मेरी ये ड्यूटी रहती है कि उस बैकअप को चेक किया करें कि ये बैकअप ठीक जा रही है कि नहीं। और ठीक। हर बैकअप जो जाती है सर, वो डेट वाइज जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, एक्सपोर्ट जी भी अच्छी ऑप्शन होती है, जी इट्स इट्स गुड। लेकिन अगर तो आप मेरे अगेन है, जो भी आप यूज करें, अगर आपने रिस्टोर टेस्टिंग कर रहे हैं और वो हो रही है ना, और जी वो जी रिस्टोर टाइम या जो भी है आपके लिए अफोर्डेबल है, देन फाइन। लेकिन ना जी फिर तो किसी को कोई इतराज नहीं होता ना। जी अच्छा, सर। एक्सपोर्ट नॉर्मली यूज होता है माइग्रेशंस के लिए, या एक वर्जन से दूसरे वर्जन, या क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल बनाता है ना, और दोबारा जी उसको सारा करता है। अच्छा, जी उसको एक्सपोर्ट करने में, इंपोर्ट करने में, अगर आपके लिए वो अनफ है, वो आपकी रिक्वायरमेंट, तो क्यों ना वही यूज करें। मेरे को आरमैन फिलहाल तो जरूरी नहीं ठीक है है। सर, कि इमरजेंसी के थ्रू वो काम नहीं आती सर। हाँ हाँ हाँ, जैसे बस कि वो। अभी एक टेबल का मैंने आपको जिक्र किया ना, तो वो फिर मैंने पूरी बैकअप ये ड्रॉप कर ली, और वो पुरानी रात वाली बैकअप फिर ऑन कर दी। हाँ, अब आपको सारे दिन का काम जाया हो गया। बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही है काम ना, हाँ। क्लियर सर। तो ये चीजें हैं, मैं देखे ना, यही मैंने शुरू से मैं यही बात बता रहा हूँ कि आरमैन जो है ना, वो आता है पॉइंट इन टाइम रिकवरी, कि जिस वक्त शटडाउन और डिजास्टर हुआ है, वहां तक वो लेके आता है। बिल्कुल सर। बशर्ते कि आपने वो जो मल्टीप्लेक्सिंग डुप्लेक्सिंग की हो ना, सारी फाइल्स की, किसी एक जगह ना रखी हो। अगर वो जी सर। सारी चली जाती हैं, तो फिर तो आरमैन भी क्या करेगा। बिल्कुल सर। ठीक है ना, वो ये फिर ये तो चीजें हैं, क्योंकि उसमें आपको वो चीजें सिक्योर करनी पड़ती हैं। अगर वो नहीं होती, तो फिर जी तो फायदा ही कोई नहीं है। आर्काइव बिल्कुल। फाइल्स अगर आपकी उसी मशीन पे पड़ी हैं, आपके बैकअप भी उसी मशीन पे पड़े हैं, आपकी हर चीज उसी पे है, और वही मशीन, वो रूम, वो ऑफिस ही नहीं रहा, आप क्या करेंगे। चाहे वो आरमैन हो या वीम हो या कुछ और हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जी सर। सर आपने ऑनलाइन क्लाउड का जिक्र किया ना सर, जी जी। तो बैकअप तो वहां पर जा रही है, डेली रिस्टोर भी हो रही है, सब कुछ काम ठीक जा रहा है, लेकिन हाँ। उसकी भी क्या गारंटी है? सर देखें, होता क्या है, गारंटी किसी चीज की भी टू बी ऑनेस्ट नहीं होती। इंसान की अपनी कोई गारंटी नहीं है। जी जी बिल्कुल। कल हम होंगे नहीं होंगे, हमें से कौन होगा नहीं होगा, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन जी आप एक मेक श्योर करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल आप वर्क उसको अल्टरनेट प्लान्स आप करते हैं, कि लेट्स से अगर ये नहीं होता तो ये आपके पास हो। जी सर। यही बैकअप प्लान होता है ना, कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जो लोकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना काम करे किसी वजह से, तो वो जी क्लाउड वाला चल जाए, या क्लाउड वाला ना चलो तो आपका लोकल चले। तो किसी एक चीज पे अगर आप रिलाय या ट्रस्ट करें, तो वो रिस्की होता है। रिस्क होता है सर। वो रिस्की है, मतलब जी अगर आप देखें ना, जो ये पैराशूट से भी उतरते हैं, उनके पास दो पैराशूट होते हैं, एक मेन होती है, एक बैकअप होती है, कि अगर मेन ओपन ना बिल्कुल। हो, तो कम से तो कम सेकंड बैकअप छोटी जो है ना, उसको ओपन कर लें। खतरनाक होती है, लेकिन बैकअप के लिए जरूरी होते सर हैं। बैकअप देखें ना, कॉस्ट तो आएगी। जी जी अगर आप दो पैराशूट लेके फिर रहे हैं, एक अगर पैराशूट 25 लाख की है, वो छोटी जो है लेट से 15 लाख की है, तो आपको कॉस्ट तो आ रही है। जी सर। लेकिन आपको एक अल्टरनेट है तो सही ना। जिंदगी में फौज तो रहेगी ना, मतलब जान भी अगेन तो वो जहाज है। ये फिर उसके लिए कॉस्ट तो चाहिए। जी बिल्कुल सर। ये अब आपने आइडेंटिफाई करना है रिस्क, आपने अपने डिपार्टमेंट्स के साथ बैठना है, अपने यूजर्स के साथ बैठना है, अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठना है, ये देखे ना, अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है। जब तक आप किसी को अवेयर नहीं करेंगे, वो तो रिलैक्स होगा ना कि चीजें सही चल रही हैं। जी सर। मैनेजमेंट को क्या टेंशन है पैसे और लगाने की, या कुछ पैसे कह लें, या एक्सपर्टीज कह लें, या जो भी आप उसको कहें, रिसोर्सेज। जी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अवेयरनेस है, ये आपने अपने कंपनीज में भी अवेयरनेस करनी है, क्रिएट करनी है। आप जी मैनेजमेंट को जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उनको भी नहीं पता चलेगा कि रिस्क क्या है। ठीक है ना। तो ये जी चीजें सर। आपने रिस्क का भी बताना है ना, कि भाई ये रिस्क है, ये हो जाएगा तो ये यहाँ पे चीजें कोलैप्स हो जाएंगी। ये नाउ दिस इज योर कॉल। और इन चीजों को बेशक इन राइटिंग रखें, थ्रू जी जी ईमेल सर। रखें। कल आपके पास, मैं बता रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता डिजास्टर हुई और आपसे रिकवर ना हुआ, सारे आप पे चढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर, यही मसला है। मतलब फिर अभी तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको पता है सर, हमें तो इस ट्रेनिंग का भी टाइम नहीं देते, कह रहे कि ये कल रात वाली जॉब से फिल्म रह गई, वो देख रहे बस तो ये तो है, डिलेमा है। हाँ ये हर सर। जगह है। हाँ लेकिन सर बहुत मजा आ रहा है सर इस ट्रेनिंग का। कम से कम अवेयरनेस हो जाएगी, और कुछ नई 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 सीखने को मिलेगा सर। सर यही होता है, मैं वही बता रहा हूँ, कम्युनिटी का पर्पज ही यही है, इसमें ताकि कोई जाहिर है, फॉर एग्जांपल अब मेरा फॉर एग्जांपल 28 ईयर्स एक्सपीरियंस है। अब मैंने माशाल्लाह। जो 28 ईयर्स में कुछ यार सीखा है, जाना है, समझा है,
मेरे से कुछ चीज, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में कोई एक लेंगे वो मैं भी बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं अगर कोई शेयर कर रहा हूँ ना, उसमें जी बिजनेस आ जाता है, वो मैनेजमेंट आ जाती है, उसमें टेक्निकल ये वो, उससे आप लोगों को बेनिफिट हो जाता है बिल्कुल सर। जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। अब जाहिर है वो हर एक अपना एक लेवल है, हर एक अपना वो रिक्वायरमेंट्स हैं, फैक्टर मतलब डिफरेंट सारी चीजें हैं ना, उसका बैकग्राउंड, उसको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, एक कंपनी में बड़ी ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, दूसरी में कुछ नहीं है। जी तो जी। ये चीजें जब आपको देखे ना, अब आपके एक बर्डन भी होता है ना ऑपरेशन का डेली। अब बिल्कुल जरूरी नहीं है बिल्कुल। कि आप इतनी उसमें R&D कर सकें या कुछ वो लर्न कर सकें रोजाना की बेस पे, लेकिन जब आपको ये चीजें अवेयरनेस में आ जाएंगी, कम से कम कुछ ना कुछ तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी ना। बिल्कुल सर। अभी मेरे पास अक्सर ना, इवन डेवलपर्स को छोड़े, मैनेजमेंट के लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, गल्फ के इवन, शेल वी यूज ओरेकल अपेक्स? अब आप मुझे बताएं, shall we use Oracle Apex? Is it secure? Is how is the performance? Any risk? This and that, मतलब वो इस तरह की, we are using Oracle Forms for last 20 years, अब ये questions है ना। तो हाँ जी। ये सेशंस करके देखें ना, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए सेशन नहीं है, ये कंपनीज की फ्यूचर स्ट्रेटेजी के लिए भी हो जाते हैं ना, बिल्कुल सर। कि यार तो नेक्स्ट हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। अब AI पे मैंने सेशंस किए, जो लास्ट मेरे 2 सेशन तकरीबन थे वो AI के थे। अभी वो मैं अब आ गया था सर उसमें। जी जी, उसमें मैं प्रेजेंट था सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ मैं ना, अब आपकी सेशन मिस नहीं करता सर। जी, मैं आपकी कोई भी सेशन मिस नहीं करता। जजाकल्ला। आपका गुड नेम? नदीम इकबाल सर। नदीम इकबाल, ठीक हो गया। स्वाद आप से हूँ सर। सवाद से? जी जी। आपसे सवाद देख, मुलाकात हुई थी लाहौर में। अच्छा अच्छा, हाँ आप आए थे लाहौर, लाहौर सेशन में। अब यार प्राइज लाहौर भी से लेके आया था सर। जी, वहाँ से एक प्राइज भी लेके आया था। हाँ प्राइज याद है ना। जजाकल्ला जजाकल्ला। तो देखे ना, सवाद पे भी हमारी वो एक अवेयरनेस सेशन पहुंच रहा है, तो ये इस लाइव सेशन के ये बेनिफिट्स भी हैं ना, आपको ट्रैवल नहीं जी करना पड़ता एक्सेट्रा। तो मैं जी। इसको ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम जो ऑडियंस है ना वो बेनिफिट ले सके। हाँ जी बिल्कुल सर। राइट, एनीवन बिल्कुल। एल्स कोई चीज ऐड ऑन करना चाहें तो? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी जी, अगर रिपोर्टिंग पर भी एक सेशन हो जाए। हाँ हाँ, रिपोर्टिंग लाइक? ये अच्छी सी कोई रिपोर्ट हो उस पर, डेटाबेस ऑरिकल के लिए। ये हम यूज करें 10G यूज कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है। हमें मुझे नई नई चीजें पसंद होती है। अच्छा, आप लोग पता है क्या करें, मैं एक अपग्रेड पे मैं लाजमी कहूंगा कि हमेशा कोशिश करें जितने जल्दी हो सके लेटेस्ट चीजों को अडॉप्ट करें। बिल्कुल सर, मैं करता हूँ ठीक, सर। हाँ आप करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी कन्विंस करें, क्योंकि जितना आप ओल्ड बैठे रहते हैं, आप कंफर्ट जोन में तो होते हैं, लेकिन किसी वक्त जाके आप स्टक हो जाएंगे, आप बिल्कुल। लेटेस्ट फीचर नहीं यूज कर पाएंगे, आपकी अपनी ग्रोथ रुक गई। लोग फिर रहे हैं 23 4 पे, उधर पहुंचे हुए हैं, अगर कोई अभी भी वो 9 आई या वो कोई पुराना यूज कर रहा है, ठीक है लिमिटेशंस होंगी, लेकिन अगर आप पूरा सिस्टम अपना नहीं चेंज कर सकते तो अपने आप को तो चेंज करें ना। बिल्कुल सर। देखें, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ERP तो शायद फॉलो ना चेंज कर सकेंगे, फॉर्म्स पे है, लेकिन अपनी जो लर्निंग है उसको तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे लाएं, क्योंकि जी आपका जी। कैरियर तो आपका कैरियर है ना। जी सर। सर ठीक। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि शैल वी यूज ऑरिकल एथिक्स, हम्म। तो ये 2010 से भी पहले का सवाल है। अच्छा, अभी भी है। हाँ जी। तो हम जब से आए हैं 3.0 से 3.1 से हमने स्टार्ट कर दी है, और जैसे ही नई वर्जन आती है तो हम चेंज करते हैं सही बार सही बार। सही और सही। कुछ होता नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी ज्यादा रहती है उसकी। सर और सिक्योरिटी है, मैं फीचर्स हैं। जी जी, मैं यूज पहले करता हूँ, हम्म, समझता बाद में हूँ। आराम सही। से समझ जाएंगे फिर, लेकिन चीज़ें मैं हमेशा नहीं यूज करता हूँ, फिर इंस्टॉल कर लेता हूँ। आल्सो सिक्योरिटी कंसर्न सिंस वी हैव अपना दानिश उबैद, या दानिश उबैद अपना माइक ऑन करें। थैंक यू सर। जी दानिश, हेलो, दानिश उबैद, आपके पास माइक है तो जरा ओपन कीजिएगा। अंदर में इनका माइक तो ओपन है, लेकिन शी शायद अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मे बी उनके, नहीं वो उन्होंने चैटिंग में लिखा है, लेकिन उनका शायद माइक सही नहीं चल रहा। अच्छा, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, मैं जरा वो रीड आउट कर लूं। नाउ डेज देर आर आल्सो सिक्योरिटी कंसर्न सिंस वी हैव बीन विटनेसिंग ह्यूज डेटाबेस सिक्योरिटी ब्रीचेस टू, so yep, we cannot entirely rely on cloud services to take the Cloudflare major server
down disaster recently as an example which shut down the chat GPT-2. दानिश, कैन यू हियर मी? नहीं दानिश, आपकी आवाज नहीं, सॉरी, नहीं आ रही थी, बट एनीवे मैंने जी आपको, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है। जी जी, मैं यार आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आप ओके आए यस जरा बात करें ना, वो जी 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 बोलें, यस सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी ये एक क्वेश्चन था मेरा कि वैसे ही मैं आपको बता रहा था कि एक तो सिक्योरिटी ब्रीचेस भी काफ़ी बड़ा एक कंसर्न बन गया हुआ है आजकल के ज़माने में ना। सितंबर में जैसे इतना बड़ा हमें एक सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला है, और फिर जिसमें से ह्यूज अमाउंट ऑफ पासवर्ड्स भी लीक हुए हैं, तो क्लाउड पे भी इस तरह से हम इतना रिलाई नहीं कर सकते। वो फिर कंसर्न्स भी है ना, इसी के वाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हेलो। अच्छा, जी जी, हाँ, मैं जो मेरा पॉइंट है वो बयान करूंगा। हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। देखें, ये इस वक्त जो एरा चल रहा है ना, इसमें सर्टन रिस्क के साथ तो आपको चलना पड़ेगा। वो ऐसे ही है जैसे आप प्लेन में बैठते हैं, तो प्लेन तो क्रैश भी होते हैं, लेकिन फिर भी आप बैठते हैं। अब होता है क्या है, आपके पास यस। क्या कोई अल्टरनेट है? मैं भी, अब अगर आप एग्जांपल आप छोड़ें क्लाउड को, सारा कुछ करें, कल आपको हार्डवेयर ही नहीं मिलेगा, आपके जो सर्वर रूम है उसकी चीजें नहीं मिलेंगी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बिजनेस क्लोज कर देंगे? ऑब्वियसली नॉट। नॉट राइट। देखिए ना, ये रिस्क है ना। अब आपने देखना है कि मैं क्या एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम्म क्लाउड में आ जाते हैं। क्लाउड में सर्टेन सिक्योरिटी मेजर्स हैं, अब वो कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेता। फॉर एग्जांपल, आपका MFA होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपका अकाउंट ही हैक हो जाता है, चाहे वो गूगल का है, आपने MFA ऑन ही नहीं किया हुआ, तो हम खुद ही सिक्योर नहीं है ना। अब इसके लिए अगर हमारे पास यस। एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे पास अपनी एक्सपर्टीज नहीं है, हमने डेवलपर को ही सारे कामों पे लगाया हुआ है, वही DB है, वही नेटवर्क का है, वही सारा कुछ है, वो एक बंदा कितनी चीजों को कवर कर सकता है? अच्छा, अब आ जाते हैं क्लाउड में। अगर आपके पास वर्चुअल मशीन है, तो उसको अगर आपकी सिक्योरिटी प्रॉपर आप उसको कर लेते हैं, तो कोई उसको एक्सेस नहीं करेगा। ये होती ऐसे क्या ही। है, वीकनेसेस होती हैं। है कैसे होती है चीज? वो वीकनेसेस होती हैं कि जो लोगों ने छोड़ी होती हैं या रही होती वो हैं। वनरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं हाँ, बेसिकली। एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। अब देखें ना, हमने अगर राइट पर्सन और राइट जॉब है, तो उसके पास वो नॉलेज होगा ना। तो अब अगर एक ही जी जी बंदे से हम सारी चीजें एक्सपेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। मेरा ये कंसर्न है, मैं क्लाउड, देखे ना, क्लाउड इट्स नॉट प्रमोशन, बट अगर आपके पास कुछ अल्टरनेट नहीं है, आप क्या करेंगे? इस वक्त अगर मैं अगर ओमान की मैं एग्जांपल लूं, वहां पे जो हार्डवेयर वेंडर्स हैं ना, दे हैव स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग यस। हार्डवेयर। इवन अच्छा। गल्फ में, आप गल्फ में आप किसने लेने हैं सर्वर्स? आप सर्वर लेके लोग क्लाउड पे जा रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी जी चली जी गई। क्लाउड पे अब अब ज्यादा उस पे है। हार्डवेयर हाँ लेने जी। वाला कोई नहीं है, हार्डवेयर इंपोर्ट कोई नहीं करेगा। आपकी हार्डवेयर हार्डवेयर क्रैश करके आप क्या करेंगे? कहाँ से लेंगे हार्डवेयर? तो कहीं पे हम्म देखें ना, ये मैनेजमेंट को बताना है ना आपने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी वो कोई बहुत अच्छी चीज है तो वो आइडियल है। बात आइडियल की नहीं हो रही, बात इस वक्त जी हो जी रही है जी कि समझ रहा है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अब क्या करें? या तो फिर आप ऐसा बिजनेस करें जिसमें कंप्यूटर्स चाहिए ना हो। हम्म लेकिन अब कंप्यूटर्स में हमें सर्टेन डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज में अब ये सारी चीजें, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमने अपना यहाँ पे क्लाउड सेंटर बना हुआ है, लोकल है, सारा कुछ है, उसने भी तो हार्डवेयर लेना है ना कहीं से। हाँ जी। उसने भी हार्डवेयर लेना। अब हार्डवेयर ये अभी रिसेंटली अगर आप देखें, जो चाइना एंड अमेरिका का हुआ है कि जी हमने वो ये देने नहीं है ग्राफिक कार्ड, GPUs, नेविडिया ने पाबंदी लग गई। ग्रे। ठीक है, हम्म अब इस लेवल पे चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब आप बिजनेस को स्टॉप नहीं कर सकते ना। जी जी नहीं वो आपने तो बिजनेस ऐसे तो नहीं होगा। कंटिन्यू रखना है। अब कंटिन्यू हम्म रखने के लिए आपको सर्टेन लेवल के रिस्क एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। हमें प्लेन में बैठना तो ये पड़ेगा कि हमने कहीं ट्रेवल जाना है, हमने बिजनेस हम्म मीटिंग करनी है। अब प्लेन में इवन अब कुछ इंसिडेंट देखें जहां पे पायलट्स ने ऐसे ऐसे लोचे किए हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि यार पायलट भी ऐसे कर सकता है। तो ठीक है। ये बेसिकली बात वही है कि हर चीज में फ्लॉज तो होते हैं ऑब्वियसली, हर हाँ, चीज के डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन आप प्लेन की बात कर लें जैसे, फिर जी भी आज का जो ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ये कंपैरेटिवली
99% सेफ है। सेफ इवन है। रोड्स पे जो व्हीकल्स हैं वो भी खतरनाक हैं। वो भी खतरनाक है, किसी हर हिसाब जगह है। लगा सकते हैं, हाँ जी। तो ये तो रिस्क है, अब आपने देखना है कि अब लेट से फॉर हम्म, एग्जांपल यहाँ से आपने दुबई जाना है, अब भाई बस तो नहीं जाएंगे ना, जी जी या आप कार भी नहीं जाएंगे, अब आपको प्लेन चाहिए। जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा तो ये कंसर्न है कि हम्म आफ्टर 2 to 3 years अगर आपके पास हार्डवेयर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, हम्म या कदम मूव करना मुश्किल होता है। तो मेरे कंपनी से ये है, मैं इवन गल्फ में भी उनको यही करता हूँ, गल्फ में भी ये चैलेंजेस हैं कि यार आप लोग फुल ना करें, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ स्टार्ट, ताकि आपकी टीम आपको, आपकी अवेयरनेस शुरू हो जाए। वो एकदम यूजर्स को हम्म जब आप वेब बेस दे देते हैं ना, जो उनके चल रहा होता है क्लाउड इंटरनेट पे, वो फॉर्म्स और उस वेब बेस में डिफरेंस आता है, वर्किंग का, हम्म वो डाटा एंट्री का, माउस का यूज, ये सारी चीजें। तो छोटी छोटी एप्लीकेशंस आप करें ताकि आपके पास इंट्रोडक्शन हो। डाउन हम्म। द लाइन अगर कोई आपको ऐसी बॉटलनेक या लिमिटेशन आ जाती है कि अब आपने क्लाउड के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो ऑब्वियसली क्लाउड ही फिर ऑप्शन मैं होगी। वही कह रहा हूँ ना, मैं हम्म क्लाउड क्लाउड इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम अवेयरनेस हो। आप जाते हैं, आज जाते हैं, 3 साल जी बाद जी। जाते हैं, 5 साल बाद जाते हैं। अब ओरेकल में आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे क्लाइंट्स भी होंगे शायद ओरेकल ईबीएस के। ओरेकल ने अब ओरेकल फ्यूजन की वजह से ओरेकल ईबीएस की सपोर्ट को कम कर दिया है। अब सपोर्ट को कम करने का क्या अच्छा तरीका होता है? जाहिर है उन्होंने जो सपोर्ट देने वाले हैं वो कम करने हैं ना, उनको तो कॉस्ट आ रही है। वो कहते हैं लोग क्लाउड पे आए। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब लोगों के पास है ईबीएस, अब आप मुझे बताएं, कल आपको सपोर्ट ही बहुत कम या इतनी कम मिलेगी या अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, आप ईबीएस पे कितना बैठेंगे फिर? अच्छा। तो ये चीजें हैं। ठीक है, आप आज मूव नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम आपके पास एक्सपर्टीज, नॉलेज, अवेयरनेस ये तो होनी चाहिए। वो बेशक हाँ छोटी जी। छोटी एप्लीकेशन जो कि हम्म। आपको, लेट से उससे कोई सिक्योरिटी कंसर्न इतना नहीं है, अवेयरनेस होगी ना। आप एडब्ल्यूएस अवेयरनेस तो पे, होनी चाहिए, जी जी। अवेयरनेस होने, आप एडब्ल्यूएस पे जाएं, आप यूरे पे जाएं, आप और किसी पे जाएं। इवन हवावी का क्लाउड है, हवावे का क्लाउड है, उनकी मैंने प्रेजेंटेशन करवानी है अच्छा। फॉर द कम्युनिटी। हवावे का क्लाउड है, आप किसी को एक्सप्लोर करें, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा ना। ठीक। रिस्क तो आपका लोकल डाटा सेंटर भी है, जो यहाँ पे डाटा सेंटर्स हैं। क्या हम अमेजोन के डाटा सेंटर के साथ अपने डाटा सेंटर्स का कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते नहीं क्योंकि कर उनके सकते। तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लेकिन वो मेजर्स हैं, वो और बहुत, मतलब देखे ऑब्वियसली ना, वो एक बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे है। तो हमारे, अगर हम अपने डाटा सेंटर्स को बड़ा सिक्योर कहते हैं, तो यहाँ पे भी तो कुछ हो सकता है ना, सिक्योरिटी तो यहाँ पे भी कोई पहुंच सकता है। अगर वीकनेसेस हैं तो वो तो उनके सॉफ्टवेयर में ही है ना, चाहे वो डेटाबेस है या वो वेब जी जी। ब्राउजर है या कुछ हाँ है। जी। तो यूज तो हम वही कर रहे हैं। अगर अगर जी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अपाची, वो अमेजोन में डिप्लॉयड, उसमें हो सकता है कि हैकिंग हो सकती है। तो क्या हम्म। जो आप लोकल करेंगे उसमें नहीं होगी? तो उसमें तो फिर होगी। हाँ, बस ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। जी सर, तो एनीवन एल्स कोई? जी जी बोलें। सॉरी। पिछला एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आपको क्या लगता है कि एसक्यूएल की जो सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है, ये जो क्यूरीज हैं, सिलेक्ट क्यूरीज जी जी सारी जो सिलेक्ट बेस स्टेटमेंट के बेस पे होंगी, तो ये ज़रा फ्यूचर होगा? क्योंकि अब जिस तरह से क्लाउड पे जा रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जी जी वो ये बताती हैं कि ये जो इंपोर्ट या डिलीट, कोई भी ऐसी क्यूरीज हो जो कि उसके रिगार्डिंग हो, कोई टेम्परिंग के रिगार्डिंग हो, जो टेबल में कुछ छेड़छाड़ करता हो, जी जी। तो वो चीज़ तो फिनिश हो जाएगी ना। और डीबीए तो यही करते हैं ना। देखें, ये जो सास है ना, सास बेस्ड, ये क्या है, जी। जिस तरह ओरेकल फ्यूजन है या ओरेकल ऑटोनोमस डेटाबेस है, अच्छा वो उसमें जाहिर है डीबीएस की एक्टिविटीज एलिमिनेट हो जाती हैं ऑलमोस्ट, या कम हो जाती हैं। अच्छा। फर्स्ट टाइम जब आप डिप्लॉय वगैरह करते हैं, चलो उसके लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, लेकिन वो फिर नहीं होती। अब डीबीएस को देखना पड़ेगा कि वो अब अपने आप को डायनामिक करें, वो सिर्फ उसी पे ना रहें। अब क्योंकि और चीज़ें आ गई हैं, डाटा एनालिटिक्स आ गया है, आपका आ गया, क्या कहते हैं, एआई आ गया, तो अपने आप को स्विच करें। हम्म। देखिए, ये कैरियर ये नहीं होता कि आपने फॉर एवर एक ही चीज़ करते रहना है। एक ही चीज़ करते रहना है, जी जी। ये टेक्नोलॉजी चीज़। फ्रीक्वेंट चेंज हो रही है। अगर आप इस वक्त कुछ काम कर भी रहे हैं ना फॉर योर कैरियर और फॉर योर हम्म अर्निंग, लेकिन उसके साथ हम्म साथ अल्टरनेट भी करें। मेरे डाइवर्सिफाई अपने आप को करना है अपने आप को बेसिकली। डाइवर्सिफाइड अब इस वक्त नहीं करेंगे तो हम्म जैसे, मैं अगर आपको छोटे छोटे एग्जांपल दूं, पहले होता था वाटर कूलर, होता था एयर कूलर हम्म जो होते थे, हम्म वो उसकी जगह एसी ने ले लिए।
एसी अब जी इतने जी ज्यादा हो गए, वो अब अच्छा नोकिया को ले लें, या आप इसको ले लें, ये जो जी। कोडेक थी, कोडेक जो कैमरास और वो थे, वो जो फिल्म हम बनवाते थे, वो तस्वीरें बनवाते थे, अब किधर हैं? नहीं है, नहीं है वो नजर ही तो, नहीं आते अब तो। हाँ नोकिया अब दोबारा कुछ कर रहा है, लेकिन देखे ना उसने अपने आप को चेंज नहीं किया ना। वो अब आप बेसिकली दूसरों को, चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ, तो चेंज को एक्सेप्ट। हाँ आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है, प्लस चेंज के साथ अपनी स्ट्रेटेजी दोबारा बनानी है कि भाई मैं अब क्या करूं इस करंट सिनेरियो में। मैं इसलिए क्लाउड क्लाउड कह रहा हूं ना, अब आप क्लाउड नहीं जी करेंगे तो आप ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे? जब जी आपके जी। पास आगे एक होता है तो ना। बात फिर एक वही पे आ जाती है कि जी बोले। जी जी नहीं मैं आपकी जी, सुनना आप चाह रहा कंटिन्यू करें, बताता हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था कि बात वही है ना कि सारे अंडों को एक ही बास्केट में नहीं रखना। हूं। तो हाँ लेकिन अब ये भी नहीं है कि आपने जो फ्यूचर जो है ना, वो अब जो चेंज को आपने वो इग्नोर कर देना है। एवोल्यूशन भी तो यही होती थी ना, कि बेसिकली चेंज को जिसने एक्सेप्ट किया तो वो आगे चल पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म। अच्छा जी, ये मोहम्मद फैसल जावेद, यार अपना माइक खोलिएगा जरा, ओपन कीजिएगा अगर आपका माइक है, चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जी, वालेकुम सलाम। आपकी जी आवाज भी सुनना चाह रहे हैं ना, सिर्फ चैट नहीं देखनी। ठीक है। और सर जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से, जरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइएगा। फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। फैसलाबाद में माशाल्लाह काफी काम हो रहा है यार। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे डेवलपर यहीं पे मिलते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स नाइस। जी सर। अच्छा सर, ये मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर ओरेकल एनालिटिक्स सर्वर, इसके हम्म। ऊपर अगर कोई भाई डिमॉन्स्ट्रेशन दे सके। हम इसे अडॉप्ट करना चाह रहे हैं एज ए ओरेकल रिपोर्ट बिल्डर अल्टरनेटिव, क्योंकि फ्यूचर में ओरेकल रिपोर्ट्स को वो डिस्करेज कर रहे हैं ओरेकल वाले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखिए है क्या है अब इस वक्त, ये वही है ना बीआई पब्लिशर। जी जी, उसी का एडवांस वर्जन, जब अब उसका, उन्होंने ओरेकल इसको ये नाम दे दिया है। हाँ उसको उसने नाम चेंज कर दिया ना, बीआई पब्लिशर है। इसमें टेम्पलेट आप बनाते हैं सारे कुछ, इसका सर्वर है, और ओरेकल एपेक्स भी अगर आप लाइसेंस लेते हैं ना बीआई, बीआई पब्लिशर ओ ए एस का, तो आप वहाँ पे भी रिपोर्ट डेवलप कर सकते हैं। अच्छा ब्रदर, इस पे ना एक तो मेरी वीडियो है कि आप इसमें रिपोर्ट डेवलप कैसे कर सकते हैं, वो मैं जब ये शेयर करूंगा उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। या आप व्हाट्सएप में मुझे अगर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा एक डेवलपमेंट के ओरेकल एपेक्स में आप। मैं इसको अभी बीआई पब्लिशर ही कहता हूँ, बीआई पब्लिशर की रिपोर्ट कैसे आप डेवलप करते हैं, उसकी टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, को कैसे अपलोड करते हैं और कैसे डिप्लॉय करते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। काफ़ी अर्सा पहले किया था। अब तो ठीक मैं भी है। कुछ में और भी फीचर शायद आ गए हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज में नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है कि अभी जो मेरा ओरेकल के साथ मेरी कम्युनिकेशन चलती है या चल चल रही है, मैं भी उनको यही फोर्स कर रहा हूँ कि यार इसमें नेटिव फैसिलिटी दो। ओरेकल एपेक्स इतना अच्छा टूल बनाया है, तो इसके अंदर ही रिपोर्ट्स की फैसिलिटी दो। रिपोर्ट्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, वो हमारी बेसिक नीड है। वो बेसिक नीड है हर कंपनी की है, लेकिन वो अपना एक और लाइसेंस बेचने के लिए ना, वो इस वजह से हालांकि कर नहीं सकते क्या, हाँ जी, हो सकता है। हो सकता है ना, उनका अपना टूल है ओरेकल एपेक्स है, इसी में डालें नेटिव। अभी तक जो मेरी जितनी भी उनके साथ होती है, मैं इसी पे जोर दे रहा हूँ कि यार इसमें नेटिव फैसिलिटी दो। ठीक है। अब ओरेकल एपेक्स, ओरेकल ने क्या किया, उन्होंने काफी सारे ले ऑफ्स कर दिए, बंदे निकाल दिए हैं। आपको 2025 में कोई वर्जन नहीं मिला ओरेकल एपेक्स का, क्योंकि बंदे उन्होंने निकाल दिए हैं काफी सारे डेवलपर्स जिन्होंने ठीक है। डेवलप करनी थी। तो अब वो 26.1 सोच रहे हैं कि अब जनवरी में आता है या फर्स्ट क्वार्टर में, या कब रिलीज करते हैं। हाँ जी, तो उनकी अभी इस वक्त अंदर के हालात ये हैं, आप अंदाजा लगा लें। ठीक है। तो तो पहले इसके ऊपर आप देख लें, एक तो वो जो आप ऑलरेडी आपने बनाई हुई है वो मैं आपसे हाँ, व्हाट्सएप मैसेज करूंगा। जी 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 जी। इस पे ना इसकी जो कह लें कि कॉन्फ़िगरेशन टाइप है, इंस्टॉलेशन मैंने की, कॉन्फ़िगरेशंस भी की हैं, थोड़ा सा आगे चैलेंज आ रहा है कि हमने इसे डिप्लॉय कैसे करना है, एंड यूजर के लिए अवेलेबल कैसे अच्छा, करना है उस आप कर रहे हैं इन हाउस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, ऑन प्रेमिसेस। on premise। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसमें मैंने क्लाउड में एक्सप्लेन की हुई है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी, और apex.oracle.com जो उनका है ना, वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की हुई है। हाँ जी। ठीक है, आप हम कह रहे हैं सर्वर जो है ना वो कॉन्फ़िगर करना है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, और और फिर आगे से ओरेकल करना एपेक्स है। के साथ उसको कैसे यूज करें ऑन प्रेमिसेस। जी। ठीक है, अगर ऑन प्रेमिसेस ना हो ना, इसमें हो क्लाउड में,
लेट्स से ऑटोनोमस, तो उसमें तो आपको वो लिंक देंगे और आप इसके इंस्टेंस सेटिंग्स में जाके वो लिंक दे देंगे, तो वो आपका यहाँ पे तो क्लाउड में तो चल जाएगा, क्योंकि ठीक आपको है। वहां पे तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता ना ये सर्वर वगैरह, वो तो ऑलरेडी हुई हैं। उधर तो लाइसेंस ही सिर्फ चाहिए होता है आपको बिल्कुल क्लाउड में, बिल्कुल। ओसीआई जो इनका ओरेकल क्लाउड है। हाँ जी। ठीक हो गया ना? तो लेकिन ये भी कर लेते हैं, ये भी अच्छा एक टॉपिक है। इस पे भी कोई देख लेते हैं कि इसको कैसे किया जाए, या किसी ने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर की हुआ तो उनको इनवाइट कर लेंगे, वो इजी हो जाएगा, बेटर हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि ठीक इसके है। आगे अब वो रिपोर्टिंग के अलावा फिर वो डैशबोर्ड्स वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के बन जाते हैं ना, बड़े इंटरेक्टिव टाइप के। हाँ एंड हाँ हाँ। यूजर ज़बरदस्त किस्म की ना डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए फैसिलिटेट करता है ये। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जी सर, एनीवन एल्स? चलें जी। आई थिंक हमारा प्लान था एक 1 आवर और 1 आवर 40 मिनट्स पे सेशन चला गया है, तो इंटरेक्टिव हो तो ज़रा मज़ा भी आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है सर? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक सजेशन थी छोटी सी। इन नहीं नहीं, फ्यूचर ऐसे नहीं, अगर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जी ऐसे जी नहीं, कौन अता पता है यार, मैंने तो आवाज़ आपकी जी जी पहचानी है, लेकिन वाकई ने तो नहीं पहचानी ना। जी जी सर, मोहम्मद इलियास अर्ज कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी। जी अच्छा सर, एक छोटी सी सजेशन ये थी कि इन फ्यूचर आप एक सेशन अगर ऑर्गेनाइज करें इसमें, हाँ जो हम लोग अपग्रेड करते हैं डीबीज, हाँ लाइक 12C से 19C, 90 से टू ऑनवर्ड्स। हाँ हाँ तो उस पे एक अगर थोड़ा सा मतलब सेशन आपकी तरफ से हो जाता, अगर हाँ इसमें कोई मतलब जो हमारे पास कम्युनिटी में जो सीनियर्स हैं हाँ हाँ। उनकी कुछ सजेशन हो जाती, तो एक ज़रा एक अच्छा एक सेशन हो जाता। मैं करता हूँ, मैं देखे ना, मैं इनवाइट करता हूँ, इवन मैंने सेशन में कहा था कि यार हम कोई एक डे रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सामने नहीं आता। प्रेजेंट करने से घबराते हैं या नॉलेज शेयरिंग से घबराते हैं, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से। लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं है कि इस वक्त जो जिस साइड पे चीज़ें जा रही हैं, चली गई हैं ना, अनकरीब ये जो होता है ना कि जी सिर्फ मैं ही चीज़ जानता हूँ, वो ख़त्म हो गया या हो रहा है। बिल्कुल सर सही। ठीक है, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करें, क्योंकि सिर्फ आपके डेवलपमेंट या वो जो आपने वो कोड कुछ जाना हुआ सीखा हुआ है वो इनफ नहीं होगा। आपको ये अल्टरनेट ऑप्शंस भी चाहिए। आप अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो भी आप नलीफाई हो जाएंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट होगी अपने बाकी कुलीग से भी, जो जिसको कोई चीज़ आता है, फीचर आता है, वो बताएं, उसको हम करते हैं। मतलब एक तो उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आ गई, उसकी प्रमोशन हो गई, उसका नॉलेज शेयर हो जाएगा सर। अच्छा, एक और मैं बात बताऊं, जो मेरे एक स्ट्रेटेजी होती है, जब भी आप कोई चीज़ जानते हैं ना, उसको वो किसी को पढ़ाएं। जब वो पढ़ाएंगे ना, तो इससे 2 3 फायदे होते हैं। एक तो सदका आपका निकल जाता है, सदका जारी है आपके नॉलेज का। वो जब बिल्कुल तक सर। वो चीज़ वो उसको यूज करेगा, आपको सवाब मिलेगा, ये अल्लाह की तरफ से ना, बंदे ने तो नहीं देना कुछ। और जी दूसरा सर। क्या होता है कि आप अब जीरो हो गए, क्योंकि आपका जो नॉलेज है तो वो तो औरों के पास भी है। अब आपको कुछ और सीखना पड़ेगा। अब आप और सीखेंगे, फिर वो आप किसी को पढ़ाएंगे, किसी को पढ़ाएं या सेशन दें या जो भी करें, अब आप फिर जीरो हो गए। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस बिल्कुल सर। ग्रोथ। तो ये भी एक लर्निंग के तरीके होता है कि आप दूसरों को जब पढ़ाते हैं ना या बताते हैं, ये लगता आसान है लेकिन टफ भी है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। क्योंकि आप प्रॉपर पढ़ते हैं या समझते हैं, फिर वो आप शेयर करते हैं, और ये किया करें। मैं हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर एक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि करें ये। फिर कुछ चैट में आई ये चीज़, सर 100% एग्रीड। बशारत उल्लाह, सर अपना माइक ऑन करें। अब हर एक के पास माइक्स तो होते ही हैं ना। बशारत उल्लाह। जी भाई, सुन रहे हैं? बशारत उल्लाह। नहीं सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, आई डोंट नो। देखते हैं सर आवाज़ ऑनलाइन। उनको जा रही है, लेकिन उसका माइक मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी। अच्छा, मैं अब देखता हूँ हमारे पास कौन है। मैं देख रहा हूँ, मे बी बहुत बतौल। ठीक हो गया। हाँ, चलें।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आया सेशन का। तो लेट्स कंक्लूड हियर। आप लोग भी काफी बिजी होंगे अब अपने डे टू डे वर्क में। So let's conclude over here and thank you very much for your attendance and keep in touch. Keep joining the future sessions as well. We will be having more sessions on different topics, on especially on Oracle, Oracle Apex, etc. So it will be a good exposure for everyone and learning as well. Thank you very much and Allah Hafiz.